of communal violence in India, of communal violence in India, like Gujarat riot, Delhi riot, Mumbai riot, Hyderabad riot. But have you seen any part of Hyderabad or Mumbai that the population have been segregated by the Indian Armed Forces? Noi mayam yang hobra ba, noi Muslim na sila sang bayaroi, Hindu na sila sang bayaroi. Aduga noi ki marakta army na khaira ka noi changan bayaroi. Hai base Gujarat riot ta ubra, Delhi riot ta ubra, utraga na Manipur na uri se kaino. Hai bakanda matuda neba ekoi na memorandum da hai se Manipur violence is a organized crime. It is engineered for divide and rule in Manipur so that Kukis and Meitei cannot live together. So until and unless this divide and rule is not stopped immediately, there will be no peace in Manipur. There will be no safe return of IDPs in their own home. Because the Kuki militants, the Shu militants, they are saying that Meitei will not be allowed to More, Meitei will not be allowed to Kangkukpi, Meitei will not be allowed to Churchandpur. Of these militants, who are them? They are the organization who have been protected, patronized, nurtured and funded by Government of India. Every cadre of Kuki militant gets 6,000 rupees. The crores of money, public tax money has been given to this militant organization. And then when they involve in the violence against any particular community, instead of abrogating this armed group, instead of disarming these armed groups, they are doing secret talks yesterday. In Delhi, they have released a press release yesterday that the Manipur governor's representative, the Home Minister representative, and the KNO and the UPF representatives were there in Delhi. Why these secret talks? They cannot protect IDPs, but they are protecting Kuki militants. Then how the peace will come in Manipur? That is why we are documenting that statement that until and unless state organized militant is not stopped, there will be no peace in Manipur. There will be no peace in Manipur. Another thing, this is not the first time that the state actually arming, weaponizing tribal population for the larger political group. Like for example, in Chhattisgarh, there was a called Salva Zudum. The Indian Armed Forces state, they armed the tribal population and they were made to fight against the political armed group in Chhattisgarh. But the Supreme Court says the tribal people are not supposed to fight with the political armed groups. This is the role of the Indian Armed Forces. This is the role of the police. You cannot arm civilian. That is why Salva Zudum should be stopped. After Supreme Court intervention, Salva Zudum has been stopped, and now there is no. But the security forces are doing their own job. The same policy has been implemented in Manipur that some of the tribal communities, they have been armed under a suspension operation. They are allowed to do extortion in the national highway openly, and the government have not intervened. That is why we actually are saying the logic behind that when the security force, when the IDPs wanted to go back to their own home, why security forces are restricting them? Because they wanted to divide Manipur and said that the Meitei cannot go to Kuki area. We cannot say the Kuki area or Meitei area, but now they said that Meitei nashida sapayade, Kuki nashida sapayade, haina kaido pugi marakta laiba warse. This is not the militant. This is the armed forces, the security forces. Then what we are saying, we also noted here that the Indian security forces are not supposed to do that work because we are taxpayers. We are citizens of this country, and your salary is given by us. You are supposed to protect the civilian IDPs, not the militant organization. Then you are doing dirty politics in Manipur, and you are saying that peace will return. That is why when they promise that IDP will be allowed to go to their own home by December. उनके नाम भी बदल गए हैं. नाम जो है तीर्थ स्थान. ये जो उस बच्चे की आवाज़ जो है उस तीर्थ स्थान तक पहुंचाना चाहता हूं. पिछले 2003 माफ़ कीजिएगा 3 मई 2023 से मणिपुर में 2 जातीय संघर्ष की वजह से, इसको 2 जातीय संघर्ष लोग नहीं समझते हैं.
आप मीडिया के लोग चाहे कोई भी हो, जो लोग बोलते हैं कि ये दो जातीय संघर्ष है, दो जातियों के संघर्ष में ये लोग समझते हैं वो एक गलत धारणाएं में है। भारत सरकार जो अपनी जो हिडन एजेंडा जो है इसको बंद कर देना चाहिए। ये मैं मेरे तरफ से, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पूरे मणिपुर के लोग जो है, पूरे देश की देशवासी जो है ये कहने लगे कि मणिपुर में खेल क्या चल रहा है, खेल जो खेल रहा है ये बहुत खतरनाक खेल है। आईडीपी मतलब यानी कि आप लोग समझना चाहिए कि बहुत लोग नहीं जानते, जो हमारे जो प्रिय जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है, वो अपनी जब इस जो नैरेटिव को जब वहाँ तक जब पहुँचते हैं तो कोई दूसरे नैरेटिव में चले जाते हैं, उस नैरेटिव में नहीं है। आईडीपी मतलब अपनी घर में ही रिफ्यूजी है, शुद्ध भाषा में बोलें तो अपनी घर में ही रिफ्यूजी। 70,000 के करीब, ये भारत सरकार के आंकड़ा है, मैं अपनी तरफ से आंकड़े बना करके नहीं बोल रहा हूँ, भारत सरकार के आंकड़ा है कि करीब 70,000 के लोग जो है दोनों जाति से जो है, दोनों जो कम्युनिटी से, दोनों जो अपने घर बार छोड़ करके एक जो रिफ्यूजी कैंप में हैं। आप सोच सकते हैं मोदी जी, ये जो 15 साल की बच्चियां जो है, 80 साल की जो बुजुर्ग जो महिलाएं जो हैं, 20 साल की नौजवान लड़कियां जो हैं, अपने अपने तीर्थ स्थान तो 12 एकड़ की ज़मीन में रखा हुआ है। ये जो रिफ्यूजी कैंप में जो रुका हुआ लोग है, ये आर्मी के बैरक्स जैसा, जहाँ पर जो है अपनी लाज शर्म छोड़ करके, जहाँ पर महिलाओं के वहाँ पर डिलीवरी हो रहा है, महिला कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं, कभी अपने सोचने के कभी कोशिश किए क्या? इस 3 साल की जो संघर्ष में आप मणिपुर गए तो ज़रूर है, लेकिन इसमें एक बड़ी विडंबना है कि मणिपुर, मेइतेई और मोदी जी, ये संबंध जो है ना बहुत ही खतरनाक संबंध हो गए। मोदी जी, हम आज यहाँ पर तमाशा या कोई चैरिटी या कोई अपील करने आए नहीं, जो एक मानवीय, जो एक मानवीय, एक ह्यूमन राइट्स की जो मूल ढांचा, जो बेसिक चीज़ें जो हैं, जो पहले थे